बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि तमाम नाज़रीन खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि जी टेन्योर ऑफ फाइनेंस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल ऑफ द रिटर्न और इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इन सभी टर्म्स को हम जो है वो आज की वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की अपडेट जल्द से जल्द आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक भी कर दें। तो चलें जी, चलते हैं अपनी टॉपिक पे। टेन्योर ऑफ फाइनेंस। द टर्म टेन्योर ऑफ अ सोर्स ऑफ फाइनेंस रेफर्स टू द ड्यूरेशन फॉर विच अ कंपनी कैन यूज इट, at the expiry of which it must pay the funds back. As stated earlier, the tenure of finance raised may be permanent, long term, preference stock, bonds, tenure, medium term, or short term. Now the question is, what factors influence a company's decisions on choice of tenure? This is a very important question that has serious implications for the continued profitable existence of a company. It will be discussed in detail in the chapter on capital structure. उसके बाद आ गया जी वेरिएबल ऑफ द रिटर्न। ठीक है, टेन्योर ऑफ फाइनेंस हो गया। Equity shares carries a various rates of return which all other forms of capital debt, and preference carries a fixed rate of return. This fact can easily affect the overall profitability of a company and therefore the wealth of its shareholder. Researchers have formulated a number of theories which explain why a company would opt for a higher proportion of debt or equity in its total capital mix. Another attendant issue is the tenure. Equity carries a variable rate of return and is a permanent source of capital. Debt carries a fixed rate of return and is almost always redeemable. These factors will be discussed in detail in the next chapter. ठीक है, उसके बाद आ गया जी इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। These are the sources that exist within the firm and for which no negotiation or arrangement need be made by the company's management with any outside party. The following are included in this class. उसके बाद आ गया जी retained earning, the excess of net profits over dividend distributions forms perhaps the largest slice of a company's internal capital. ठीक है, this attract no nominal cost and involves no tedious or intricate negotiation with any external party. This improves the capital structure of the company as it leads to a higher equity total. A company with a high percentage of equity is generally viewed very favorable by the lenders and suppliers. ठीक है, उसके बाद आ गया जी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। Depreciation is debited to profit and loss account है but is not a cash outflow because in real term no cash is paid out. Hence the net profit shows a figure that is actually less than the net cash inflow actually generated by the company through its operations. Since only the profit figure are disclosed by the income statement is available for distribution in the form of dividends. उसके बाद आ गया एडजस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल आइटम्स। ठीक है, working capital is usually the excess of stock, debtor, and cash over creditors. Each of these items can be adjusted in a time of need to provide some finance without distributing the working capital ratio to any great extent.
For example, with some rearrangement, the rate of stock turn may be improved and a reduced volume of stock carried. This would eventually translate into extra cash. The working capital ratio will not be disturbed because over a period a reduced stock working capital ratio will not be disturbed because over a period a reduced stock level will result in higher cash balance। ठीक है, तो ये हो गया जी एडजस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल आइटम्स। ठीक है, उसके बाद सेल ऑफ फिक्स एसेट इन सर्टेन केसेस इट मे बी। ठीक है, तो समटाइम कंपनीज क्या करती हैं कि जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती मशीनरीज वगैरह फिक्स एसेट उनको बेच देती है, या फिर जो कंपनी की मलकियत में कार्स वगैरह होती हैं, ठीक है, जिनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो भी कंपनी जो है ना वो सेल कर देती हैं, जिससे कैपिटल जो है ना वो मतलब कि फाइनेंस मिल जाता है उन्हें थोड़ा सा जो है ना वो अपने लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।